copy it. On the board. Electronegativity, right? Electronegativity PDF. Okay. So I'll just share this. So we'll discuss some examples in each. It's a very important topic for JEE because there is a scale to measure. There are 3 scales which are used for measurement of electronegativity. Okay. Polling is very important. Let me show you the example of. इसका Yep, I'm just. फिर से बढ़िया आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. It's a carbon monoxide, neutral oxide. Okay. Anyway, least bothered. Okay, so electronegativity is. All right, I'm just pasting. Just have a look at it. हाँ जी, लो देखो. You see that formation with the, like you said, carbon, CH4. वही लिया इसमें example. Look at the first figure. This one, you see this? देखो उसके बाद फाइनली किस तरह से अलाइन हो गई है. और ये एक्चुअल शेप ऐसे बन जाती है. Right, so you have 4 hydrogen atoms sharing electron with 1 carbon. Each covalent bond has 2 shared electrons. The 4 bonds are identical and repel each other. ये देखो. Electrons spend majority of the time between the 2 nuclei and results in the attraction of the electron and the 2 nuclei, which is origin. इसको तो रहने दो. Broadly, what it means is this pair of electron which you see from one from carbon and one for hydrogen, this pair of electron is attracted by the parent nucleus towards it. और ये जो है सारे के सारे, ये देखो. So participating atoms कौन से आपके हिसाब से? Which are the participating atoms? Let's first talk about them. Hydrogen and carbon. And carbon. Right, CH4, right? We are talking about Methane. CH4. Correct. तो participating तो पता चल गया ना? कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. Okay, let's say that is a situation. So which means if carbon pulls away the electrons towards it, what will happen to the hydrogen side? It will become positive. हाँ जी. इसको बोलते हैं dipole physics में. One side negative, one side plus. So generally I would keep in a sphere and I will say this side is carbon, this is hydrogen, this is a shared pair, right? Okay. Assume you pull the pair towards yourself and you become this. So you become negative and it leaves behind positive. Okay. Now when hydrogen sees this is positive, this is positive, this is positive, they repel each other. What has got induced is called as a dipole moment. We will study this in physics in class 12 chapter number 1. Electrostatics. Electrostatics. सारा उसी पे based है, but we are not going in that direction at all. फिलहाल we are right. So electronegativity is essentially nothing but asymmetry being introduced within a covalent bond, which we thought is going to be very symmetrical. बिल्कुल सेंटर में होगा, दोनों बराबर बराबर शेयर करेंगे, ऐसा होता नहीं है. So the covalent bond is very good explanation of the electronegativity behavior. अगर हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकलता है. हाँ, वो रिलेटिव है. वो रिलेटिव भी पढ़ेंगे हम कि it is not an absolute thing.
depending on situation and the electronegativity which is assigned to the atom. There is a scale. We have to refer to the scale. A fluorine may be working with someone, some other atom to create a covalent bond. In that case, fluorine may be able to attract electron towards it. But compared to some other atom, when it creates a chemical, it may be acquiring positive charge with respect to that. वो chemical fluorine से भी electron खींच ले. So it is a relative term. But idea समझ में आ गया? The idea of electronegativity. Forget the scales right now. Just the idea कि it has Yes, something to sir. do with. Let's move forward. Okay. Now, what do you think are the factors which decide this attraction towards the pair? मैं Factors. कार्बन हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ली, राइट? Yeah. क्यों? हाइड्रोजन ने क्यों नहीं ली? Um, But there should be some logic to it also, ना? वो scale का logic है. We have a scale logic, which is there, but we have other logics also, which we have studied. Okay, so let's say participating जो एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसके अंदर, राइट, उसके अंदर one of them has very high nuclear charge. okay. Very high nuclear charge means very low shielding, हाँ जी. which means it will not let the electrons go easily, even in a pair. ठीक है. So what factor is one? So essentially, if I say nuclear charge, I mean shielding, or I also mean size of the individual atom, which is the radius. All these three are one and the same thing. Radius, nuclear link है आपस में, इनका आपस में. Although they're presented in a way that it sounds very different, but to me I use them interchangeably. To me, a large radius means low nuclear charge. So if I am a participating atom with very small size of the radius of who I am, my radius is very small compared to the other atom which is participating in the formation of the bond. Then what happens? My radius is very small. Will I be holding my electron properly compared to the other one which is bigger? Yes. If my size is small, I will be able to hold my electrons tightly. Okay. And which also means if my size is small, my nuclear charge is also high. Okay. So I will hold them, right? So the factor on which this decision will be taken, whether or not the electron is going to be attracted on this side or that side, is a function of the size of individual atoms which are participating in formation of the bond and their nuclear charge respectively. There were scientists who did a calculation of 3 scales, which was a scale only and not an absolute scale. And they created some formulas where if you put certain values pertaining to the participating member atoms who create the covalent bond, you can tell who is more electronegative, who is less. So they created a scale. Okay, let's say, but basic. What do you think happens from your general knowledge of periodic table by now? What happens to electronegativity down a group? Now that you know it is a function of size of the atom, the larger the size, lower the electronegativity. तो सर अगर डाउन द ग्रुप जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी. Exactly. बिल्कुल सही बात है. ये रेडियस बढ़ेगा. इस क्वेश्चन को जेई मेंस में ट्रिकी वे में पूछा जाएगा. They will not ask you in a very friendly manner. They will make it twisted, right? Okay, let's say you create hydrogen fluoride. फॉर्मूला क्या होता है? HF. HF. Simple, right? And then you create hydrogen chloride. HCl. Right. Okay, so let's do a small comparison of HF and HCl. दोनों में फ्लोराइड है, हेलोजन है. क्वेश्चन है कि जो बॉन्डेड पेयर है जी. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो
फोकस है अट्रैक्शन का, राइट? यस सर। वो जो आपका बॉन्डेड पेयर है, राइट, दैट दैट वो किस में, क्या फ्लोरीन उसे अपनी तरफ खींच लेगी या क्लोरीन खींच लेगी? मेरा मतलब क्लोराइड है। फ्लोराइड। सर फ्लोरीन का जो रेडियस है हम्म। वो So you mean the क्लोरीन से छोटा है। electronegativity? So therefore the electronegativity of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी fluorine, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। yes. So it will attract more, right? हाँ जी। So if a so they will not ask you a direct question. ओके। Question will be indirect. They will not use the word electronegativity. They will say HCl HF, हाँ जी। right? So they will say, you know कि what happens in a group. They will not स्कूल में ही आएगा, एक सीरीज दे देंगे और बोलेंगे अरेंज दिस सीरीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज यू वुड नो ये ग्रुप है या ये एक पीरियड है. यू विल मेक अप योर माइंड एंड राइट इट डाउन. In JEE mains, they will not give you direct question. They will say four molecules are given: HF, HCl, HBr, HI. Example: ओके। which of the following will exhibit maximum electronegative? Which one exhibits maximum electronegative behavior? So you should know what's happening. आयोडीन का सर एटॉमिक नंबर कितना होता है? Yeah, I don't know. First 20 only I know. But I'm just giving you a glimpse of second point. So one is the attraction is determined by the size, right? The second factor which decided the attraction was what? एक तो Nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज। Now tell me from nuclear charge story the same thing. Now you have a fluorine which is and a chlorine. Chlorine के अंदर number of shells ज्यादा होते हैं. I hope you know that, right? यस सर। Fluorine छोटा सा है और 2-7 है तो शायद, इनका वो एटॉमिक नंबर भी 287 है. 17 होता है। हाँ, तो this is a fight of 2 1:2 comma 2 7 2,7 वर्सेस 2,8,7. ठीक है ना? तो और जो पेयरिंग हो रही है वो हो रही है फ्लोरीन और क्लोरीन की विद हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली 1+. ओके। So this is what you're referring to, right? So I'm saying you are creating hydrogen and then you're having a fluorine और ये हो गया chlorine, right? And there is a sharing, right? So this is H and this has 2, this has 3. Okay, so this has 3. 1, 2, 3, and this is 1, 2. Now if you notice, this is hydrogen here also, and there is a hydrogen 1+ and a 1+. And there is some sharing happening between them. The question is, I have drawn them far away, but wherever they're touching each other, as in they are touching, as in मतलब मैं अगर इसको if I select it and I want to move this, they're touching each other here, right? And at the point of touching, is the shared electron, okay? ठीक है। ये यहाँ पे, right? You have shared. And same is true for the other diagram, okay? I have shown separately, but it is not a separate situation at all. It is, मान लो कि it is also identical. It is like this only, right? Now explain the same concept of electronegativity with the help of effective nuclear charge. How is that impacting the electronegativity? Think. सोचो. इफेक्टिव ये न्यूक्लियर तो पक्का है कि क्लोरीन का देखने पे सीधा सीधा नॉर्मल चार्ज ज्यादा है 17, उसका 9 है. बट क्लोरीन के अंदर शील्डिंग भी तो ज्यादा है ना फिर. यस सर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर कैलकुलेशन आप कर लो, हाँ जी। right, you will be able to find effective charge of the electron in of interest. You know which rule I am referring to? स्लाटर। Exactly. Now, let's say we don't want to get into that detail and we broadly know कि as we are moving from fluorine to chlorine, the effect, what happens to charge when you move down a group? डाउन ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस.
increases या shielding Down the wins group. या Sir, shielding wins yes, sir. shielding wins. And So what happens when you go down? Will chlorine feel more effective charge or fluorine? Who will feel more? It decreases. The effective charge decreases as you go down. So who will feel less force? क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, somebody, विल as इट we go down the group, effective nuclear charge decreases. राइट तो क्लोरीन में डिक्रीजेस? कम फोर्स नहीं यस, तो क्लोरीन के पास ताकत होगी इसे उतनी ज्यादा खींचने की कंपेयर टू फ्लोरीन नहीं होगी, होगी. राइट? सो इवन द यू कैन टू मी बोथ द वर्ड्स लुक वेरी सिमिलर, the size and the concept of nuclear charge, but somehow they are given as separate. Okay, Okay. tell me, two marker in your school, explain the behavior of electronegativity across a period. रीजन देखे. सो टू मार्कर है, अब करो अपने आप को टेस्ट. 2 नंबर के लिए क्या क्या लिख के आओगे? एक एग्जाम्पल दोगे, 2 नंबर के लिए एक एग्जाम्पल दोगे, कॉन्सेप्ट समझाओगे. एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन साइंटिफिकली उसमें कीवर्ड्स मिस ना हो. नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड. क्रॉस अ पीरियड. ठीक है हमने पढ़ा था, सर. हाँ जी. वैल्यूज निकाली थी, 2.2 आ रही थी सबकी. यस, सेम मतलब यस, इट इज सेम रहती है. अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, हमने पढ़ा था. अब समझ तो आ गया था, लेकिन क्वेश्चन है स्कूल के अंदर एक्सप्लेन द, तो हमने बड़ी बड़ी वो स्लेटर पढ़ लिया. क्वेश्चन क्या आएगा स्कूल में? एक्सप्लेन, अरेंज, पीरियड. गिव वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर एंड डन विद. ये स्कूल का होगा लेवल. उसमें मेमोरी आपको याद करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस. उसमें नहीं आएगा आपको ऐसे स्लेटर की कैलकुलेशन, इट इज नॉट गोइंग टू कम. कि अगर आपको याद रह गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट अक्रॉस ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट सेम. अक्रॉस अ पीरियड. यस, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, सॉरी, द शील्डिंग रिमेन्स द कांस्टेंट. शील्डिंग रिमेन्स. गॉट इट? इन द सेम पीरियड. यस. ओके, और गिव एन एग्जांपल. कल हमने उसका भी क्या कहते हैं, लिथियम और पोटासियम. यस, लिथियम नहीं, सॉरी, सोडियम और पोटासियम. या वो तो साइड था. Now, वो तो now ग्रुप में you're था. creating covalent bond, right? So the context is covalent bond. वो तो shielding हमने isolation में पढ़ी थी ना. हाँ जी. Shielding of this, shielding of that in an element. But हम तो covalent bond के context में individual electronegativity behavior देख रहे हैं कि दो किसका ज्यादा है वो अपनी तरफ पेयर को खींच लेगा. Give me an example of electronegativity behavior which I will show you the graph also. I don't know NCERT ने दिया कि नहीं दिया. We will see. Generally it remains constant within a same period. Yes. Who have the same number of inner shells, क्योंकि period में तो same ही रहता है. So give me an example of electronegative behavior. For example, if I say the behavior is NH and FH. NH and FH. क्या example होगा? Who will attract more based on your knowledge of shielding now? NH and FH. नाइट्रोजन करना चाहिए अटैक ज्यादा. Why? Draw the diagram, explain me. Draw the diagram of covalent bond, which means show me the shared, tell me the electronic configuration, show me the shielding effect. एग्जाम में 2 नंबर के लिए बोल रहा हूं मैं तुम्हें. ये मुझे आंसर नहीं चाहिए एमसीक्यू वाला, लिख के दिखाओ मुझे. पिछली बार I trusted you completely. Therefore I said brilliant guy can do exemplar and all that. But when it comes to writing, you're pathetic, man. सोडियम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जी, कोवलेंट बॉन्ड की. एक NH का कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, दूसरा मतलब वही बॉन्ड वाली बनाइए. लिख दो ना, कहते हैं क्वांटम वाली 1s2. हाँ लिख दो, चलेगी. आई एम गुड विद दैट. You need to show me the electron of interest. Please don't write all. So अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, तो मेरा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट कौन से वाले हैं? 5 है ना बार. 2 7 2,5 सॉरी. तो आई हैव द 5 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ऑफ इंटरेस्ट टू मी. आउटर मोस्ट शेल में सर 5 3 हो गए ना, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3.
लेकिन सिंगल जो है वो तो 5 हो गए ना टोटल, एक के साथ बनेगा 2 और कोवलेंट 5। बॉन्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट की बात करो, एक एच के साथ एक इलेक्ट्रॉन जाना है। If you have to explain it to someone and say, look, I am in a period and I am doing hydrogen bonding with a nitrogen and then a nitrogen bonding with a fluorine, what will happen? How will you represent it diagrammatically to the world is my question. So hydrogen is bonding with fluorine, one diagram. Hydrogen हाइड्रोजन इज bonding with nitrogen. बॉन्डिंग विथ फ्लोरीन। Yes. HF बोला था ना मैंने, you have to draw a covalent bond between H and N and H and F. Draw a covalent bond and then focus on the pair and then decide based on their positions, relative positions of N and F, who will be having more or same amount of shielding. Because we understand electronegativity, there are minor fluctuations across a period. Or more or less, it remains constant in a period. बट डायग्राम से कैसे समझाओगे लोगों को कि देखो ये फ्लोरीन है, इसका हायर न्यूक्लियर चार्ज है। वो कैसे बताएगा, नहीं हाँ, सोच रहा। हाँ, लिखोगे ना डायग्राम बना के, यू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड। एक लेबल करोगे यहाँ पे अट्रैक्शन, जैसे मैंने करी थी। सो ये आपका जो फालतू इलेक्ट्रॉन्स है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है एच एफ का, जी। वो तो पेयर यहाँ पे है ना। हाँ जी। तो ए हेयर इज द अट्रैक्शन कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके। and here in NH, this could be NH because it is only 2 ऑर्बिट्स, राइट। तो ये 5 हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4, और पांचवा ये रहा, और हाइड्रोजन का ये रहा। ठीक है। और इधर भी वही है, बट हेयर इट इज ऑब्वियसली NH, राइट, HF। तो यहाँ ओके। 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और 2 ये वाले हो गए, एक हाइड्रोजन से आ रहा है और इधर से आ रहा है। नाउ यू विल से हु हैज मोर शील्डिंग बिटवीन द टू। let me remove it. Let me remove the extra orbital. ये रहा मेरा extra orbital भी मैंने हटा दिया, so that now it is clear in your mind कि we are dealing with situation of 7 protons and 5 protons. हम तो शील्डिंग के टर्म्स में सोच रहे हैं ना, तो शील्डिंग के लिए मुझे ये तो दिखाना पड़ेगा पहले, न्यूक्लियर चार्ज 5p and 7p, but 2 and 2 because we are in the same period. So यस। our the shells which are filled up are same till 2. हाँ जी। हाँ जी, अब बताइए कि इसकी शील्डिंग ज्यादा होगी या इसकी शील्डिंग ज्यादा होगी। किन इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज्यादा नजर आएगी आपको? वेयर इज सर, शील्डिंग इफेक्ट मोर प्रोमिनेंट इन 7 2 1 2 3 सर 4 5 में 5 ज्यादा होना 6? चाहिए। Okay, so let me write it. So you will write in the answer the shielding effect is higher here. कि सर इसका वो लाइक साइज ही बड़ा है ना। वो तो यार तुम्हें दिख रहा है, वैसे एटॉमिक नंबर के उस हिसाब से जाओ। नहीं नहीं, उसका 7p, किसका? 7 वाले। हाँ, ये बड़ा है ना। हाँ, ये इसका ही बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, ये बड़ा एग्जैक्टली है। exactly. तो शील्डिंग इज हायर हेयर, करेक्ट, ठीक बात है, शील्डिंग बिल्कुल सही जा रही है, और अट्रैक्शन यहाँ पे है, राइट, वेर एवर वी आर। ये लो, अरे लो जी, थोड़ा ऐसा स्लिप जोड़ क्यों लेना। कर रहे हो आप? अरे मैं उसको यार जोड़ रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू शो कि वो उससे टच हो रहा है और वहाँ शेयरिंग हो रही है। हाँ चलो कर दो, मुझसे तो हो नहीं रहा यार, ये ज्वाइन इट। ठीक है, जस्ट पिक इट एंड ड्रॉप इट। ठीक है, रब इट ऑफ एंड मेक न्यू, यार छोड़ो, गोली मारो। रुक जाओ, हो जाएगा। ओके, फेयर इनफ, वी कैन डू इट। So you know there is a higher nuclear charge on the right hand side. 7 9 plus, sorry. Why have I written this, right? This is 9 plus. We're talking about 9 protons here. So we're talking about 9 protons here, and we're talking about 7 protons here. So Yes. now we have to do a comparison in a period.
यू एक्सप्लेनिंग समवन, देखो जी मुझे ना नॉलेज है पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर की, वो ऐसा होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ। स्कूल में ऐसे नंबर आते हैं, ठीक अब है। क्या लिखोगे नीचे? हाँ। हाँ, राइट। सो जो NH बॉन्ड है हाँ जी। वो कितने इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, प्रोटॉन से, सॉरी। द NH बॉन्ड, दिस वन, आ, कितने इलेक्ट्रॉन से खींच रहे हैं अपनी तरफ, ये वाले को? 2। पांच, चार, राइट। एक, दो, 4। तीन, चार। ये चार ठीक। इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे दम लगा रहे हैं। ओके। ओके, एंड देयर इज अ न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी। सिमिलरली हेयर द शील्डिंग इज मोर, यस सर। shielding is higher here, right? We have written हाँ already, जी। shielding is higher. And how many electrons are impacting the bond? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यहाँ पर? अच्छा। Proton, sorry, proton. प्रोटॉन्स। Nine protons, right? 9 So प्रोटॉन्स। these nine protons are attracting this. This is a isoelectronic type of situation. I mean, it's not identical, but something quite similar because the two is same in both. ठीक है। टू सेम है। अब इस पे चार्ज बहुत बढ़ गया, 9 हो गया। ये टू ही रहा लेकिन चार्ज बहुत बढ़ गया। हु विल विन? द वन विद मोर चार्ज, राइट? हाँ जी। यस। राइट। बट हमें मालूम है द शील्डिंग इज सेम कैलकुलेशन में। हाँ जी। द शील्डिंग इज आइडेंटिकल। सो यू एक्सप्लेन दैम कि इवन दो द प्रोटॉन नंबर हैज गॉन अप, yet the calculations of shielding show that the shielding in both the situations is identical, which means the impact of 7 protons or 9 protons on the bond is same, ओके। and therefore the electronegativity across a period remains same. ठीक है। स्कूल में ऐसे समझाना होता है, वहां नहीं तुम लेटर लिखोगे सिग्मा, कोई nobody gives a damn to that. School is very bookish type of paper, should be theoretically very strong there in writing. Conceptually you may be good. स्लाटर स्लाटर रूल अगर लिख के आओ तो नहीं नहीं मिलेंगे नहीं मार्क्स? नहीं मिलेंगे नंबर, नहीं, नो, you will lose marks. Please don't overwrite. Just stick to their expectations. It's another exam. See that it is more of conceptual exam, but with more verbose. अच्छा अच्छा लिखा हुआ, सजा हुआ, neatly titled. That is what they look at when they give you marks. They don't give you marks for your brain there. 100%. वो जेई वो वेट कर रहा है, वो तुम पढ़ते नहीं हो, इधर तुम लिखते नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता विच वे विल यू गो फाइनली। स्कूल में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। जेई की किताब नहीं खोली जा रही। ओके, सो आई होप दिस डिस्कशन वाज फ्रूटफुल एंड गिविंग यू सम ग्लिम्स। हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू द अदर पार्टी? अपने लिए नहीं लिखना, दूसरों के लिए लिखना है आपको। Explain it to the teacher with diagrams, labeling, circle nicely drawn. You will get good marks. 15 से ऊपर आने चाहिए भाई इस बार। आई एम वरिड। ऐसे तो प्राइज आएगा। देखो धीरे धीरे तो हमारा खाता केमिस्ट्री में खोलना ही है मैंने। यू मस्ट स्कोर इफ इट इज अ 30 marks, 27 at least, to prove your mettle that you have the caliber to face an exam. You have a good habit and the flexibility. You will learn something, I am telling you, for JEE mains. Once you do NCERT, you will realize yourself. You learnt a lot through that exam. मतलब that book also. सारी दुनिया JEE mains के लिए पढ़ के जा रही है केमिस्ट्री की बुक। All right. So let's progress to the next topic. Scales, etc. We will do after your examination. Okay. So very lengthy topic. Scales. स्केल्स। There are 3 scales which are used. Okay. So we will तो do ठीक है, one ओके, one of them. बाद बहुत में कर लंबा है, लेंगे। आराम आराम से हो जाता है। All right. Did we do electron affinity? एफिनिटी। करा हमने? हल्का सा हमने बस थोड़ा ग्लिम्स दिया था पर हमने किया चलो, नहीं let's प्रॉपर्ली। do that. Electron affinity is your attraction towards a electron, whether you how easily as a gaseous atom
as a gaseous atom, which means you're talking about p block, some of them, how easily you can accept an electron. Okay. How easily you can accept. Now, if you notice a gas which is there in the p block and all that, and there are standard conditions which are STP type of conditions, and you add Standard electrons to, temperature yeah, and वही pressure. मतलब, and you have 1 mole of gas. 1 mole of gas. Right. ठीक So है. you have 1 mole of gas, you have 1 mole of gas, and to each gas atom, you want to add 1 mole of electrons. Right? We have to see this mole of gas, how much electron affinity it has. You already know some of this through so many words which have come up. If you notice your first two groups, they are metals. Are they going to accept electrons? No, not at all. Not at all. You know which is being what is being referred to. तो electron Actually, you're affinity null होनी चाहिए इसमें. मतलब exactly. So it's very difficult. Practically, you can't force a metal to accept an electron. Not वो possible. देंगे. हाँ, exactly. Octet पर वही एक same. हाइड्रोजन को अगर देना हो तो H2 तो बन जाता है, कोवलेंट बनता है उसके अंदर. It's not a metal. So it is नहीं मतलब placed there, but it is not. रिएक्टिविटी सीरीज में लाइक उसको प्लेस किया जाता है. हाँ. Okay. So पता नहीं. so if you are a gaseous mole, I mean you're a mole of a gas. Now and fluorine, for example, fluorine, right? You have 287 and you want to accept it, 1 electron. What happens then? If you accept the electron, what happens to chlorine? Tell me, what happens to chlorine? If the Noble chlorine, gas configuration requirement. correct, which is more stable, right? Yes. So your chlorine, you can accept an electron, you're good to go. मतलब near noble gas configuration. You're good to go, right? And therefore, this is accompanied by release of energy. The system becomes more stable by release of energy. So this reaction is a exothermic reaction. Exothermic, ठीक है. Loss of, it becomes more energy stable. release हुई है. Yes, simple, right? So you're exothermic. This happened when you accepted the first electron. If you accept the first electron, this is correct. Let's go to second situation, right? We will study about it. Now tell me, is it okay to say that for every element, the first gaseous p block, okay, the electron affinity will be exothermic of it's an energy. Electron affinity is by nature exothermic or endothermic. It's an energy released during that process, right? So therefore, if I were to ask you what happens to those elements, for example, in halogen group, will they always give exothermic? Generally, yes. because the electron which they take is lying at infinity, and that electron will come to their outermost shell, and और will energy complete. release होएगी. And yes, and it will feel the attractive force of the nucleus, right? Yes. What do you think the affinity is going to be? And by the way, see, a lot of properties we study, like you said, metal में क्या होगा? Metal में उसको पढ़ने की जरूरत क्या है? मेरा question है. Why do you want to study on a metal? I think our relevant group for studying electron affinity should be only 17. Most relevant. If you want to understand electron affinity of practical importance, what do you think is going to happen in the group 17? That trend should be known to you. Because वो हेलोजन जो होते हैं वही बनाते हैं NaCl, HF, ये सारे HCl, ये सब वो they are the ones which create the compounds, through gain of electrons. So our electron affinity study should be focused there. Shouldn't be focused anywhere else in the periodic table. We can study theoretically wherever you want to, across a group, across a period. But it is common sense. Electron affinities metals में नहीं है और ना ही noble gases में. हाँ. इन दोनों में नहीं. हाँ. मतलब fluorine etc. is a gas obviously, but preferably you would like to study in certain groups. Yes. And my favorite group for studying electron affinity is not metals. I would like to study it in halogen number 1. Most preferably.
नहीं मतलब मेटल्स में होगी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? नो, दे हैव नन. तो तो फिर क्यों पढ़े? Don't need to, right? Values हाँ are जी। given like 100 times bigger and all that. कोई हमको कोई we are not and so the whatever you create is going to be so energetic, it will not stay. It will be unstable because you're adding energy to it. If you extract energy, it becomes stable. If you add energy, it will become unstable anyway. हाँ। So why do you want to attempt it? You know, even if there is a theoretical value, that there is some value, what do you achieve of it? Nothing. So focus on 17 here for a while and think 17 mein how will it behave. Now you are in 17 group, you're going from top to bottom and think what happens from fluorine onwards. And by the way, since it's a loss of energy, the axis we are referring to is this negative axis, okay? This is increase in atomic number. This is your electron affinity of the first electron. We will come to the second electron being accepted, but the measure is in negative direction. The heat loss is moving like this. So I start with fluorine. Okay, it is placed here. Now, do I go here or do I go here? Electronegative, or do I, so it's a straight line and done with, So thus, and I can give you reasoning why it is easier to put an electron in a larger sized atom in a group, and in a group we तो also know the अफिनिटी shielding फिर effect. बढ़नी नहीं चाहिए? हाँ, बढ़नी चाहिए. बढ़ बढ़नी चाहिए। यस, बढ़नी चाहिए. मैं क्वेश्चन टू यू इसका वो बढ़ती है. What is the general trend? You're right. The general trend is it increases, which means it becomes less and less negative. It becomes less and less negative, right? This is what it लाइक means. क्योंकि डाउन द negative ग्रुप side ना। है. हाँ. Now what happens? But you will notice that it doesn't happen. That's the point. इंट्यूशन। Intuition, बताओ. ये तो you've been saying, shouting from rooftop. There are exceptions. There are, but there is a reasoning to it. Now tell me what happens after fluorine to chlorine. It goes further down. क्यों? क्यों सर? सोचो सोचो सोचो. फ्लोरीन में क्या खास बात है? एक्सेप्शन है। हैं? एक्सेप्शन है इसी वजह नहीं नहीं, से। एक्सेप्शन नहीं है. यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग, चार्ज, ऑर्बिटल, स्टफ लाइक दैट. स्क्रीनिंग तो वैसे क्लोरीन में ज्यादा होगी। हाँ, तो क्लोरीन इम्पैक्ट से। क्या है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अक्रॉस, राइट? वो ठीक है, बट व्हाई दिस सडन शॉक। हाँ, मतलब व्हाई द आर। Z effective, the etc, but what happens to the suddenly in a group of most importance, इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप है और उसके अंदर सबसे पहले ही झटका आपको ग्रुप में मिलता है. क्वाइट अ शॉकर. वही नहीं समझ आ रहा क्यों होता है, क्या एंड impact no, we have studied two factors which impact electronegative affinity, sorry. है? यस सर। We know the two factors. We have a sense of the factors कि क्या क्या factors से होते हैं जो affinity को impact कर सकते हैं. और मैं सिर्फ 17 पे focused हूँ, by the way, okay? हाँ जी, I'm not ठीक है। focused, which is clear to, right? So this can be one of the questions to you ऑब्वियसली ये 17। because I said 17 is of interest to अटर me. इम्पोर्टेंस। Uh, if I show you हम those होती है। questions, हाँ मतलब affinity जो है वो electron affinity, why the electron affinity of chlorine is more than that of fluorine? That's the point, right? ये पूछ रहे हैं हम कि वो और नीचे क्यों हो जाती है. You know the electronic configurations. You have a sense of electronic Yes, sir. configuration. You know that. तो जरा अपना शार्प ब्रेन लगाओ जरा, जो तुम्हारा कीड़ा दिमाग है सोचता है अलग तरीके से. इंट्यूशन। इंट्यूशन बता दो. आई एम गुड टू गो. ये तो पता चली गया ना फ्लोरीन और उसका कि कुछ तो इसमें देर इज अ
Where you डाउन got द to ग्रुप think. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम होती जाती है. Down the group, electron affinity. अच्छा. आप ये बोल रहे हो ना? See, it has to be drawn on the negative side. हाँ जी. So as you go down, it becomes less and less negative. As the ऐसे. atomic number increases in the group, which means you are moving to the larger shell numbers हाँ जी. down the group, the electronic affinity, which is the capability to accept an electron, the more amount of energy is released because it is less negative. As you go down the road. पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ना आप. ठीक है. उसके What is the क्लोरीन electronic configuration of fluorine? Write it. 1s2. ठीक है. 2s2. ठीक है. 2p वाले सारे बांट दो. 2p2, 2p2, 2p1. 2p5. हाँ मतलब 2p2 अलग अलग कर दो क्योंकि p पे फोकस आने वाला है हमारा थोड़ा. क्लोरीन का लिख लो. 2p2. 2p2. हाँ ठीक है. 17. तो 3 वाले जो आ गए 3p2 और 3p1. 3p2, 3p2, 3p1. क्लोरीन का लिखते हैं. हाँ लिख दिया. So you've written for fluorine. Now you write for chlorine. 17 होता है ना? Yes. Eight. 12. 3p5. ठीक है. एंड आयोडीन. आयोडीन का भी लिखो. नहीं नहीं. 2 is enough. Because we're comparing these two only. That's all. मैं देख रहा है कि आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है. Why fluorine starts at a higher level than chlorine? Fluorine is more electronegative. So the anomaly is in fluorine. Fluorine में गड़बड़ है. फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है क्लोरीन से. इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है. ओके. उससे कोई लेना देना नहीं है पर इलेक्ट्रोफिनिटी से. ओके. उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था कोवलेंट बॉन्ड पे ज्यादा कोवलेंट फोकस्ड. बॉन्ड में वही कह रहा हूँ. कोई लेने देना इसका क्या नहीं. लेना देना है इससे? नहीं है यार. वही तो. This is all about the fight between screening and which means the electron cloud and the charges in the proton. So if you notice how many protons are there which are screening how many electrons in the case of chlorine? electrons are being screened by. Yes. जो भी इलेक्ट्रॉन आप लोगे, क्लोरीन हैज टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, राइट? सो न्यूक्लियस क्या है क्लोरीन का अंदर? देयर आर 17 प्रोटॉन्स, राइट? क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स. क्लोरीन है ना? 17. तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या फेस करेगा? 17 प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन. हाँ जी. और जो 10 स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका धक्का. हाँ जी. हाँ जी. क्लियर है? फ्लोरीन में क्या होगा? फ्लोरीन में 7 प्रोटॉन होंगे. 7 प्रोटॉन है. हाँ 9 प्रोटॉन, सॉरी. 9 प्रोटॉन्स. और कितने स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे उसको? जो इलेक्ट्रॉन आएगा 4 ना. 4 कैसे भाई? फ्लोरीन में 2,7. 7 इलेक्ट्रॉन्स. हाँ ठीक है. सो देर आर सो नेट. अगर मैं forget the Slater for a while, don't worry about Slater at all. I am saying chlorine has how many protons? 17. And how many
electrons are we referring to? Which are the screening? N. No, yaar. How many? What is the net attraction from the nucleus is what we are trying to calculate. What is the net attraction from the nucleus? 17 In terms of इलेक्ट्रॉन, proton and neutron only. 17 प्रोटॉन्स है चलो फ्लोरीन में। 17 प्रोटॉन है, चलो 17 प्रोटॉन ले लेते हैं। अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। राइट। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इट विल फील द अट्रैक्शन ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन्स। बीच में कितने 7। स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट और सेकंड लेवल में? थर्ड वालों की फर्स्ट, बात नहीं कर रहा, नहीं बीच नहीं, में बात कर फर्स्ट रहा और हूं मैं। 10 है, 10 है। 10। तो मोटा मोटा अगर स्लेटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि 17 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग स्क्रीन्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। 17 प्रोटॉन्स आर बीइंग स्क्रीन्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेट न्यूक्लियस आपको नजर आएगा 7+। ठीक है। सिमिलरली 9 प्रोटॉन्स आर बीइंग स्क्रीन्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोल रहा हूं स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन में शेल को अलग मान लो, 1s2 सिर्फ। जो इनर शेल है, जिस शेल में आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, उसके अंदर एक ही शेल है ना। हाँ जी। फ्लोरीन में देयर इज ओनली वन शेल। यस। So 9 protons are attracting the incoming electron, extra electron, and 2 electrons in the inner orbit are pushing it back. So the net effect on the inner incoming electron is only 7+ protons. फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है। अभी रुक जाओ, तो इसका मतलब दोनों में the electron which is coming in experiences 7+. अच्छा ठीक है। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं कि भाई टोटल प्रोटॉन माइनस स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन ले लिए वो वाले जो अंदर वाले ऑर्बिट में थे, एक छोड़ के। ठीक दोनों है। में बराबर है 7, राइट? नाउ व्हाट इज द समझे। डिफरेंस देन? इफ द स्क्रीनिंग इज आइडेंटिकल, that means the effective charge is 7+ in both the cases. What can be the difference between them for this anomaly to arise? What is the other factor now you will jump on? So you've discussed detailed screening of both of them and you realized, yeah, both are getting attracted. The incoming electron is getting attracted by the same power of the nucleus, which is 7+. ठीक है। 17 minus 10, 9 minus 2. I'm not writing today. I have some carpal tunnel. Okay, I'm not able to write. मुझे दर्द है अंगूठे में यहाँ पे. I'm not writing too much. So I'm only doing conceptual discussion. Okay, it will help you memorize also for your school. Now tell me, what can be one more factor which could have introduced the difference दोनों के बीच में? एक अफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज हो गया है। स्क्रीनिंग और न्यूक्लियर चार्ज खत्म हो गए। तीसरा फैक्टर क्या लेना पड़ता है जिसपे चीजें डिपेंड करती हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? थेरेपी तो डिस्टेंस, साइज, डिस्टेंस। ओके, द रेडियस। रेडियस, राइट? और क्या बचा है ना? रेडियस। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन वेयर यू आर एक्चुअली जंपिंग। यार ये दोनों चीजें बराबर हो गई। वैसे तो हम इन सबको एक ही जैसा मानते थे। वी थॉट ऑल दीज आर सेम, बट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन वी से ओके, शील्डिंग सेम है, इफेक्टिव चार्ज सेम है, एक ही चीज अब फर्क रह गई, विच इज द साइज, विच मीन्स हाउ मच डिस्टेंस डज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हैव फ्रॉम द न्यूक्लियस? I am saying the greater the distance, less is the attraction. लेस इज द अट्रैक्शन। दूर हो ओके। ना, electrostatic force. हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक है। है? So I'll say since you're away and your attraction is very low, anyways, when you come, you don't feel too attracted anyway. So you will release less energy when you come to somebody like a chlorine. Chlorine will say, I will not release too much energy. I don't anyway have too much interaction with you. You don't impact me as much. I will release less energy. The fluorine says, you come close to me, I become unstable. I will release more energy. ठीक है। Right? So you see that if you start picking in a halogen kind of scenario, what
it's complicated, right? It's complicated. So, which means in a fluorine, like just a statement to bring to your head that this is bit different than all what you have studied so far. ये स्टडी नहीं करा आपने कि पहले इसको हटाओ फिर इसको हटाओ, अच्छा आप डिस्टेंस को लो. इसका मतलब है फ्लोरीन में if you bring in a electron to an electron cloud, you are going to crowd that electron quite a lot. पहले वो crowded है क्योंकि दो में है. बाकी क्लोरीन में तो थर्ड में थे क्राउडिंग, right? If you introduce an electron closer to the nucleus, then so that means the electron cloud which is being referred to now is in orbit number 2 for fluorine. But for the chlorine, the electron cloud which being referred to is orbit number 3. Okay. So in a fluorine scenario, you will have what? You will have more repulsion also. Okay. It's a smaller, it's a 1s, 2s and 3s. इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? 3s. इसका मतलब 2s वाले जो हैं सारे, उनका ऑर्बिट तो सेम है, लेकिन वो ऑर्बिटल छोटा भी तो होता है. सो फ्लोरीन का जो भी जिसमें भी तुम एंट्री डालोगे, उसका ऑर्बिटल का साइज compared to the where you're putting in a chlorine and the third is already small. Your electron cloud, the 3D space in which the probability of finding the electron is high, in fluorine is already a small cloud. Because it is in 2. Yes, sir. If you're in 3, your cloud size is very large. If you put an electron now in a larger cloud versus a smaller cloud, where will the electron face more repulsion? Repulsion in the larger. Why? वहां तो खुला खुला है सब कुछ. Okay. छोटे क्लाउड में उसके उसी क्लाउड के इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेंगे. ठीक है. Which means if there is repulsion in the fluorine, right? Which means there is less attraction for fluorine to accept the electron. Because the size of its electron cloud is also very small. अभी फ्लो ठीक है. ठीक है. फिर लेकिन एनसीईआरटी में होगा भी ये? नहीं होगा. This is a classic JEE discussion happening. This is very one group में एक anomaly. Right? Which means if you take up an electron in fluorine kind of situation, right? Will a fluorine love to have an electron? It has repulsion towards the electron. It does not want the electron. मतलब compared to chlorine. Chlorine का तो outer में है ना. Hence this anomaly. Therefore, fluorine needs more loss of energy to become stabler. कि आजा चलो आ जाओ तुम आ जाओ, because it is accepting the electron in a place where the electron cloud is more. So we have come down to, we went to screening calculation at a broad level, 17 minus 10, 9 minus 2, and we said screening more or less 7 plus hai, khatam, effective charge. Then we went to size. Then we went to orbital, which is electron cloud. Okay. So this is the way you will think. So if they ask you please explain the anomalous behavior of fluorine, you will get the answer only in a JEE advanced level book. And you will never come to know these questions exist. So you will go prepared with 60% preparation. Look at how cumbersome it is to discuss one anomaly. So they will ask you a graph. एक graph आएगा आपको. उसके अंदर they will mark the points and they will say, the above graph represents an atomic number versus electron affinity graph. And they will mark A, B, C, D. They will say, this C represents chlorine and this represents this. Which of the following is true? And more than one is right. More than one is right.
अगर आपने सुना ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे साइज का फ्लोरीन के अंदर, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे तो स्क्रीनिंग पता है, स्लेटर मालूम है, इतना डिटेल्ड हेलोजन के अंदर मैंने करा ही नहीं था। हम्म। Right, so be very careful that you're up against a difficult examination. It is not run of the mill mood based examination. I don't want to study today, I want to study too much today, i I am doing homework, doesn't help. You can see one electronegativity discussion in a group of halogen is mind boggling. हाँ जी, टाइम ही लगे इतना ज्यादा। टाइम लगता है, और वो मैं ही पढ़ाता रहूंगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अपना पढ़ने का। एक एक लाइन जेई एडवांस का मतलब है, मतलब प्रैक्टिकली यू हैव टू लीव योर स्कूल, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू स्कूल, फॉर एंड एडवांस ना। यस यू हैव टू, कोई चॉइस ही नहीं है, अदरवाइज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, एज सिंपल एज दैट। इफ यू सिटिंग एट होम एंड डूइंग दिस होमवर्क्स एंड ऑल दैट एंड यू नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, मैं कितना धक्का लगा दूंगा यार, अभी तो एग्जाम आ गया ना, तो और हमारा कोर्स थोड़ा पीछे है, बट ये सब लिखा हुआ है। All we need is someone who's given an introduction, explained the concept, explained the anomaly. Please go and do this in the form of questions. See what type of questions do they ask on the same concept. It's hidden generally. Okay, now the question, why do metals have a low electron affinity? If you have to explain it to your teacher in a school, what will you write? Metals have low Reasoning है, electron दो मार्कर है। affinity हाँ हाँ, because because they have tendency to lose electron rather than gain it. agreed. Now look And at the difference. We were studying the what topic were we studying? electron affinity. Which is what? Energy. हाँ जी। And therefore you did not even utter the word energy. You have a mind of a 9th standard student who is valence electron awestruck. Please move forward and say, and therefore to gain electrons it will require huge amount of energy than is necessary. Also, which is not it, possible. it is also not possible. Also, it does not have any strong pull on the valence electron. Because now They will you are become a, unstable. yes. Do you have a do you think the nucleus of sodium has a strong pull on the valence electron? No. No, you did not say that, na? Because in your mind valence electron word is enough. No, it is not. You will think in terms of energy now, because the chapter question was electron affinity. The answer was valence electron. Because it has valence electron. Okay, ठीक है. Valence electrons want to run away. Why? To require more Because amount of energy. yes, they're Like, necessary, and then they and also it have would no have a pull. less pull over the valence. Absolutely. If so, which means there is no energy for an attraction. There is nothing. If you don't, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, लिखना है इसको, सब कुछ लिखना है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, but when you put it on paper, write it very nicely, dot diagrams, write it neatly, and be very clear. Every keyword is known to you. यार electron affinity, I'm 11th standard student now. I will not restrict my answer to valence electron here. That's very stupid. Even if it is a simple question, look at the answer quality. Because you don't pick up the book and memorize and make notes. Not because of lack of IQ. Okay, let me ask you. Why, theoretical question of school, 2 marker. Why are atoms with a low electron affinity more likely to lose electron than gain electrons? Why are atoms with a low electron affinity, basically halogeny समझ लो, are more likely, sorry, to lose electron than gain electron? So we're referring again to what? Low electron affinity. Again atom metals, right? Again the same thing. But now the question is not metal. The question is, why are atoms with low electron affinity? So you should think he's referring to metals. Okay, explain. As you move down a group of the periodic table,
What happens to the electron affinity? Does it increase or decrease? If so, give reason. 3 marker. Explain जो करना है कर लो. ग्राफ याद करना पड़ेगा एनसीईआरटी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का. पीरियड में कैसे जा रहा है, फिर ग्रुप में कैसे जा रहा है. एक्सप्लेन. लिखो. सोचो क्या क्या लिखना चाहोगे. जनरल क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बिहेवियर बताइए एक पीरियोडिक टेबल में. Electron affinity generally decreases down a group वेरी नाइस. पूरे नंबर अभी तक. because हाँ. atom का size बड़ा है. ओके. सो ओके. ओके. व्हाट डज दैट ट्रांसलेट इनटू? साइज बड़ा होने से क्या हो जाता है? You Size mean to बड़ा say होने there are the energy levels in which the electron will be placed हाँ जी. will be farther from the nucleus. That Other is what from you the mean. nucleus. Please talk in terms of energy level. Energy, Energy. not Energy. size. Question is electron Okay. affinity. The word energy must appear in the answer. आगे बढ़ो. हाँ. The electrons are placed in further energy Further levels energy levels away from the nucleus. away from the nucleus. So what happens? There is no attraction to the nucleus. हाँ जी. So there will be a repulsion of हाँ. Coming valence from the. electrons हाँ. Yes. that like acts और मुझे बताओ. शील्डिंग इफेक्ट तो तुमने बोल दिया मोटा मोटा, राइट? देयर इज अ रिपल्शन यू विल फेस बिकॉज देयर इज एन एग्जिस्टिंग layer of electrons, right? So farther you are, more shielding you will face, yes sir. right? But tell me, if you're coming to the same orbit, if you're हाँ coming जी. in with, and don't worry about shielding now, don't worry about nucleus. Let's talk about your neighbors now. Let's talk about your neighbors, which means you're in the same shell, but in different orbitals. Same shell, but different orbitals. Won't they also push you, They would. repel you? They would. They would. But what happens? How much charge is there on the valence? कम होता है ना? हाँ जी. So outer energy levels, what's so special about them? Only the outer shell की बात कर रहा हूं, जहां इलेक्ट्रॉन आपका आना चाहता है, वहां पे नेबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है? What exactly is happening at the outer level? An atom already at the outer layer has a less number of charge because those are not the core electrons, they are the valence electrons. Agreed? Hmm. Now, why will it accept more charge? My question. Should I repeat the question? Make it Yes. clear. Okay. You, on the external periphery, you already have very few electrons. हाँ जी. So the number of energy levels that exist there is very less. 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है, ऐसे ही होता है ना? हाँ जी. अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? हाँ जी. तो जो शील्डिंग इफेक्ट है, हाँ जी. what happens to that? Across a period, Group, down a group. the shielding effect increases. Yes. What happens due to shielding? It causes repulsion, Yes. Repulsion of electrons. right? The valence shell. हाँ. So repulsion की वजह से क्या हो जाता है? They move away from themselves. अपने से ही दूर दूर हो जाते हैं. हाँ जी. And the electrons also. They move away from electrons also. खुल जाता है ना? It opens. Yes sir. So the overall cloud moves away from the nucleus. Yes. ठीक है. Agree. तो मतलब if you have done detailing and you have written it down somewhere, which is written in the book, every book you will pick up has this. Concept wise, how will you put it on paper is very important. पेपर में लिखोगे तो तुम लिख नहीं पाओगे, मुझे सुनाई दे रहा है.
You will know what's shielding, what's that, but because you're not acquainted very well with it, because you have never written in your house, लिख के नहीं देखा, फिर बुक से कंपेयर करके नहीं देखा, you will realize most of your answers lack a keyword. ठीक है। तुम्हें खुद सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारे कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं. हाँ जी। Okay, one more question for you. Let's put you to some grilling today. Okay. Explain the electron affinity behavior across period 3. क्रॉस पूरे ऑफ पीरियड पीरियड। में समझाओ, पूरे पीरियड में समझाओ. Explain what ठीक है। happens. Okay, let's see what trend comes. This is the level of detailing you do for the exam you're preparing for. ऊपर ऊपर से नहीं होगा ये. जी बोल। Period 3 में please with the knowledge of shielding you have acquired, I'm not saying you will be able to do or not. I'm saying apply yourself and see whether those same concepts you have learned for a group, what happens when you apply them to the period. पीरियड। Period 3, पीरियड 3। which is aluminium and all that. नहीं, नो सोडियम से शुरू हो रहा है। पीरियड 3 Okay. ना, Okay. सोडियम से Yeah. शुरू। Okay. Fair enough. ठीक है। Okay. Let's restrict the discussion to the P block only. Period 3 P block में, ये ब्लॉक में ठीक which है। means you go to aluminium straight away. हाँ जी। Start तो from aluminium, move towards किधर जाओगे? aluminium के बाद क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है. फॉस्फोरस। ठीक है, बस इन्हीं को कंपेयर करो. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन. नाउ ठीक टेल मी. So I have restricted your conversation. So I'm focusing है। group by group in certain cases, period by period in certain cases. If you do this, you have understood the concept pretty well. Across a period, you already know. इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, अफिनिटी। तुम्हारी मैम ने कराया है ये? पता ही नहीं होगा. You would not know. नहीं 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 सर, नहीं करा। नहीं कराया होगा. उन्होंने बताया होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है जनरल ये डिस्कशन भी हुई होगी. सर ऐसे ये नहीं बताया। हाँ, ऐसे डिटेलिंग वाइज नहीं होता है वो, तो उनका काम वो नहीं करते, वो स्कूल का नहीं होता ये. बट इफ यू गो टू अ प्रॉपर मटेरियल, यू विल सी दिस डिस्कशंस इफ यू स्टडीड प्रॉपरली. अभी तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल छोड़ दी है. Even if you can सर memorize your ABC, now that you understand shielding क्या होती है वगैरह वगैरह, and you do your ABC, कौन सी बुक पढ़ते हो तुम, जो भी है, you can मॉडर्न get एबीसी। full marks in your school. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन तुम्हें शॉर्ट इलेक्ट्रॉन आंसर है. अफिनिटी इंक्रीज इंक्रीज होनी चाहिए लेट्स डिस्कस पीरियड 3 व्हाई. में। व्हाई व्हाई इंक्रीज का मतलब है, you mean it will become more positive or more negative? Which means, will it be more exothermic? Will you end up losing more heat continuously? Or are you suggesting the heat loss will continuously decrease? पहले आई मीन 400 जूल का लॉस था, अब 50 जूल का हीट लॉस है, ये इंक्रीज बोल ज्यादा रहे हो? होगा। हाँ? हीट इंक्रीज ज्यादा होना चाहिए। So you're saying there will be more loss? हाँ जी। Agreed है, बहुत बढ़िया आंसर है, एक्सेलेंट. बताओ क्यों? 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 तुम्हारे पास और कोई रीजन है? एक तो तुम्हें न्यूक्लियर चार्ज का बहुत अच्छा फंडा मालूम है, एक तुम्हें एटॉमिक रेडियस का फंडा मालूम है, पीरियड में बाकी प्रॉपर्टीज भी तो तुम्हें पता ही है ना. दोज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिसाइडिंग ऑल ऑफ दिस, प्राइमरीली द न्यूक्लियर चार्ज एंड द साइज. न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होने की वजह से, हाँ, बड़ा हुआ, यस, अक्रॉस अ न्यूक्लियर चार्ज पीरियड, बड़ा है तो इसी वजह से एक्सोथर्मिक ज्यादा होगा। यस. तो क्योंकि यू आर टाइटली बाउंड. तो तब की और रेडियस को क्या होगा? रेडियस भी सर बढ़ता है।
डिक्रीज होगा ना, नहीं, लेफ्ट टू राइट यार, अक्रॉस अ पीरियड। रेडियस क्यों? शील्डिंग विंस। शील्ड, यस सर, वो तो ठीक है, पर क्लोरीन का ज्यादा होगा ना रेडियस अच्छा। किसका? पीरियड 3 में क्लोरीन का। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर और सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन, राइट। हाँ जी। सबका लिख लिया। तो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस? एल्यूमिनियम इज Al3+, जब भी बनेगा। Al3+, तो मतलब वो तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे छोड़ हाँ के। हाँ। और ये बनेगा Cl-1 मोस्टली। अच्छा, So what happens to the atomic radius from left to right in a period? हमने राइट। एटॉमिक साइज पढ़ा था, मतलब हाँ जी। रेडियस अक्रॉस अ पीरियड। इट डिक्रीजेस हाँ देख लिया। एज वो डाउन, हाँ नहीं सॉरी, ओके, सो और यू हैव डाउन गिवन तक द रुक रीजन जाते तो नाउ। वो इंक्रीज होता है। नाउ you have given the reason. Most of your reasons are hidden in only two answers continuously. Nuclear charge, size, और क्या आता है? शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज साइज और शील्डिंग और स्क्रीनिंग। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन सा है, ऑर्बिटल्स छोटा बड़ा या पी या एस है? और क्वांटम चैप्टर नंबर खत्म। भी एक तरह से। चैप्टर खत्म। ये 5 फैक्टर अगर जिसको समझ में आ जाते हैं और कुछ खास तरह के पीरियड और ग्रुप पे वो फोकस कर ले, जेई एडवांस्ड और जेई मेंस खत्म। आपको सारे एनसीईआरटी में जो ग्राफ बने हुए हैं वो याद करने हैं, ऑल द ठीक है, ग्राफ्स। ठीक है सर। और I'll tell you why. I'll tell you एनसीईआरटी why. से, एनसीईआरटी से एनसीईआरटी, याद करना है ना यस, एंड डेफिनेशंस। मॉडर्न एबीसी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता ना यार, वो दे विल आस्क यू सम पिडली टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर एंड देयर, बट ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पे है प्रैक्टिस के लिए जो याद कराएंगे आपको? ए बी लेट, सी डी। हाँ, एबीसीडी। तो यू बॉट अ बुक कंप्लीटेड ना, टेक वैल्यू आउट ऑफ दैट। ठीक। That is a good businessman who's worried about return on investment. Says, मैंने यार, I bought a book for 400 rupees. What is the return on investment? Forget 400 crores for a while. You can't even extract ROI from a 400 rupees book. आरओआई What क्या होती है? businessman? Return on investment ना? आपने अच्छा। 2 रुपए लगाए, 10 रुपए कमाए। हम्म। That's a businessman, right? यस। बुक में लगाए पैसे, क्या रिटर्न आ रही है? 15 नंबर आए हैं तुम्हारे। गधे की तरह मतलब पेरेंट्स तुम्हारे जो है लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है उनके पास। तुम्हारी रिटर्न 0, 50% है, कंपार्टमेंट। अब तो लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। तुम्हारी लगाता हूँ मैं लास्ट, जैसे बोलते हैं ना वो क्लास के, व्हाट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दें तुम्हें? ओके, लेट्स गिव यू अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। कर तो तुम लोग है, मतलब you just need to do one thing. Please go back and study from NCERT and keep on the right hand side this book, modern whatever you study, and you're done with. फिर टेस्ट है तुम्हारा। I will show हाँ you जी। the type of questions that can get created of this wondrous chapter, and the depth, and they're easy, they're not difficult if you understand screening, size, and shielding, and which orbital are you going in, ps versus small s versus small big s. You're done with this chapter. Only thing, you should know where to apply which key. चाबी सारी होंगी, कहाँ लगानी है ये पता होना चाहिए, that's all. Let's, okay, let's put you in enthalpy. Okay, this is typical, the questions you like to do, so I will ask you those. Okay, I will check your projectile assignment also with the same lens, whether you have written nicely or not, to score.
स्टेप्स कितने नहीं कटते? मैं काटूंगा स्टेप के तुम्हारे, मैं तो देखूंगा तुमने वो मन में कराया या सामने वाले को समझाया। बोर्ड में तो कटते हैं स्टेप के। तो मैं बोर्ड है ही नहीं ना। ठीक है, तो चलो चेक मैंने करके बता मैथ्स दो। में एक हाँ, बहुत ही अलग मेथड से सॉल्व करा था। क्या? एक सेट का क्वेश्चन था, प्रूविंग का। अरे वाह, कौन सा मेथड बिल्कुल है भाई एकदम ये? इंट्यूशन से। ओके, बट डज इट हैव एनी रूल एसोसिएटेड विद इट? यस यस, रूल्स है जो आपने दैट डी इज, मॉर्गन के नहीं बताए थे, ए हाँ माइनस बी वाले। हाँ ठीक है। वो रूल यूज करके मैंने सॉल्व किया था, मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। ओके, मे बी अ मैम हैज अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉजिक। कल वी आर मीटिंग अगेन फॉर केमिस्ट्री। ओके, पढ़ते रहना, मेमोराइज करते जाओ, दिस टाइम प्रूव एवरीवन रॉन्ग, दैट यू कैन स्कोर वेल, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल। क्या 15 नंबर आ गए? शुड आई आस्क यू अ जेई क्वेश्चन देन? ठीक है। वो तो तुम कर लोगे, मैं तुम्हें ऐसे घुमाने वाला क्वेश्चन देना चाहता हूँ। टेक्स यू, ठीक। फोर्सेस यू टू थिंक, तुम जेई के तो एमसीक्यू कर लेते हो। लेट्स पुट यू इन अ, यस, ऐसे मेरे एमसीक्यू में बिल्कुल नहीं कटे थे। मुझे मालूम है, यू आर ऑल्सो टिपिकल लॉजिकल ब्रेन, बट okay, look at the quality of question, not difficult. Only thing is it'll just push you to think and nothing more than that. It is not an MCQ, but it's a very logic driven question. It has nothing to do with JE and all that. It'll enhance your knowledge. पेस्ट कर दो। आ जाओ बच्चों। पेस्ट। Alright. आ रहा है, चिंता मत करो तुम। Now you will know what the power of this question is. Alright, let's do this. You can open NCERT, it's an open book exam, allowed. मैं प्रैक्टिकली आज तुम्हें अब तुम्हारा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में। यही क्वेश्चंस होंगे, इंक्रीजिंग लिखो, डिक्रीजिंग लिखो, चार्ट बनाओ, इसका बस क्यों मैं। एनॉमलस होता है, बस यही क्वेश्चन लिखे होंगे चार। मैंने तुम्हें भेजे भी हैं आज सुबह, हाँ जी। रीजनिंग असर्शन, और मैंने तुम्हें यस। मटेरियल भेजा, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हुक और बाय क्रुक, स्कोर वेल। एक मिनट सर मुझे। नो वरीज। मोटर। कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। सोचो सोचो सोचो, यू आर अलाउड टू ओपन योर बुक। आई एम मॉडर्न एबीसी साथ में एनसीईआरटी, एनी बुक यू वांट टू, बिकॉज आई वांट कि तुम्हें पहले ही पेपर पता चल जाए यार। ये लो, ये आएगा, अब बताओ, अप्लाई योरसेल्फ। पेपर बताने के बाद लिखने का काम तुम्हारा है, उसके बाद मेरा काम खत्म होता है भाई। आई कांट डू मोर देन दिस, स्पेंड ये 5 hours, टेल यू द पेपर। You're authorized to open your NCERT. I'm good with that. It's fine. नहीं, Read. which of the elements A to I belong to the group 1? हाँ, तुम्हें मतलब ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू, इफ आई गिव यू अ मतलब ग्राफ। एलिमेंट्स का नाम बताना है इसमें। देखा है क्वेश्चन को? Which of the elements A to I belong to group 1 in the periodic table? हाँ, तो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए ग्राफ किसका है। अगर आपने अनुज। एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब आई एम जस्ट
ऑब्वियसली यू विल टेक टाइम टू मेमोराइज, अपना टाइम भी चाहिए ना पढ़ने के लिए आपको। हम्म, तो आप जब पढ़ो तो ये क्वेश्चन देख लो अपने सामने, ग्राफ देख के चले गए लेकिन याद नहीं करा, गॉन। यार ग्राफ तो मैंने करे बुक थे लेके लेकिन मुझे आया, याद नहीं आ रहा है। बुक लेके आया मैं। हाँ ले आओ, उसमें से ढूंढो, वर्बटम ऐसे ऐसे का ऐसा ग्राफ बना हुआ है। पिकअप बुक एंड आइडेंटिफाई किस चीज का ग्राफ है ये। ले आए? ओके, ओपन इट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। आंसर मुझे दिख चुका है। पहला हिंट तो ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स। ऑलराइट, आई एम बैक। पहचान पाए? You can open any page of NCERT. Please open, and you can see ionization energy, माने ion बनाना, electron addition और subtraction, right? And see the graph. Ditto graph बना हुआ है। ये बना हुआ तो है, काफी 3 ग्राफ्स बने हुए। हाँ जी, तो ये पहचानना है आपको। पहले तो एलिमेंट्स कौन से हैं? एलिमेंट्स तो सर वही है फर्स्ट ग्रुप के, लिथियम हाँ सोडियम। जी, यस। तो आपको नाम पता होने चाहिए सारे फर्स्ट 20 के। टुडे वाज टीचिंग समवन, उसने पहले 40 याद करे हैं। उसको हेलोजन ग्रुप इवर्बिटम याद है, ट्रांजिशन के अंदर इंपॉर्टेंट वाले याद हैं, कोवलेंट बॉन्ड वाले याद हैं, और पहले 20 तो रटे हुए हैं। मेमोराइज करा है, एफर्ट करा है। मेरे को नहीं आते थे आयरन का, तो फटाफट आंसर आ रहा था। सो दे एक्सपेक्ट बेसिक नॉलेज प्री रिक्विजिट फ्रॉम यू। कोई नहीं बताएगा आपको आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यू हैव टू नो इट। अरे तो चलो वही है ईमान, ग्रुप वन। ठीक है। सो यू कैन यू सी द ग्राफ विच इज बीइंग रेफर टू हियर? हाँ Second one is very simple for you. यस सर। Do you see the word explain your answer? एक्सप्लेन। Which of the elements A to I belong to group 1, and then explain your answer.
That means you have to explain each of the cross. सर ये लिथियम, पहले सोडियम, मुझे ये तुम्हें चार्ट मिल गया एनसीईआरटी में आइडेंटिकल आइडेंटिकल से मुझे 3.6 बी मिला है। आयनाइजेशन एनर्जी का? हाँ जी सर। इज इट ऑफ ऑल द ग्रुप्स और इट इज फॉर ओनली वन ग्रुप ग्रुप? वन, ग्रुप वन। ग्रुप वन का मिला है हाँ जी, ग्रुप तो वन। आइडेंटिकल ही होना चाहिए बिल्कुल, हाँ जी वैल्यूज सर, में भी। वैसा ही है। किलो बट जूल सर पर मोल ये वाला जो है। ए और बी है ना, इसमें सबसे ज्यादा 2000 की है, अच्छा, वो मुझे नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही? 2000 वाली, अच्छा, उसमें वैल्यू अलग है। उसमें 550 से लेकर पेज नंबर 374 बताओ, तक है। पेज नंबर बताओ मुझे। पेज नंबर है सर 88, 88। ओके, लेट्स सी। Page number, let me go there. Okay, I am also going there. Okay, I'm there. I am there on 88, yes. 88 में सर 3.6 बी। तो 88 में बेसिकली 3, अच्छा बी, ओके, 3 पॉइंट दिस 2500 है तो सही एक। 2500 वाला वो सर हीलियम वाला दिखा रहे है वो दूसरा 3.5 वाला है, बट ये तो सेकंड पीरियड दिखा रहे हैं इसमें। ए नहीं सर, वो अल्कली 3.6 मेटल्स, बी, बी 3.6 द बी। अल्कली मेटल्स, राइट? हाँ जी, ओके 3.6 बी सर। ओके, ये 550 से दिखा रहा है। हमारा कौन सा है? हमारा लाइक 1600 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो आपको पहचानने ना कौन से एलिमेंट उसके हैं। पर ए और बी इन में नहीं पहचान पा रहा। बाकी कौन कौन से हैं? बाकी तो सर वही लिथियम। कहाँ से शुरू हो रहा है? मार्क तो करो। Some don't belong to that group, right? This is what it means. Some belong, some don't belong. You have to find the ones that belong. What do you mean कि you're not able to identify? अच्छा, which belong to, यार, okay। this is why I said the power of writing and doing questioning yourself. कितने क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं? तुम्हें क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आया। Some don't belong, some belong. You are struggling कि ये फिट नहीं हो रहा। फिट होगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही वही है कि which one doesn't fit. I hope you got the type of questioning it is. Yes sir। ओके, सो ए टू आई में से सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था कौन से। लेकिन अगर आपको ये ग्राफ नहीं आता एनसीईआरटी का, वी डोंट मेमोराइज दिस ग्राफ, विच यू मे थिंक इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, इट इज नॉट। सर ये तीन ही है, है? सी, डी हाँ और ई। हाँ, बट टेल मी, will it take effort to memorize this graph or not? यस सर। It will. If you don't memorize, you will again get 15 marks. मैं मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते थे, मुझे शील्डिंग आता था, स्लेटर आता था, एमसीयू के मेरे सारे ठीक हो गए। मैंने मेमोराइज कुछ नहीं करा क्योंकि मेमोरी के लिए बैठना पड़ता है टेबल पे। यार हमने भी पढ़ाई करी है, एवरी डे 8 आवर्स वाज द टारगेट। कोई होमवर्क भी पूरा हो जाता था, खेलने का भी टाइम था, सब कुछ था हमारे पास। वी हैड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट वन। Which of the elements Could K2I have. could have the Look at the degree of difficulty if you don't remember this graph. magnesium? सी देखो, सी Explain the rise in the first ionization energy between E and G. हाँ जी, जनरल ट्रेंड कहीं नजर आ रहा है अपवर्ड का, वो क्यों है ट्रेंड वो वाला ए टू जी का? पहले तो आइडेंटिफाई करो, अगर मतलब ग्राफ याद करो, फिर आयनाइजेशन अक्रॉस दैट पीरियड या जो भी है ग्रुप, उसमें उसको समझाओ शील्डिंग वील्डिंग से। फिर बोलता है एस्टिमेट ऑल्सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जे। द ग्राफ से यू कैन रीड राइट स्ट्रेट अवे, एंड इफ यू हैव टू एस्टिमेट, यू आर गोइंग टू टेक इट स्ट्रेट लाइन, राइट? योर ट्रेंड इज अपवर्ड्स, हाँ जी। take it straight line wherever it crosses
I think it crosses as तो 1400. डी तक ही अपवर्ड्स है। हाँ, एक एक्सेप्शन आई है, तो मेरे जैसा बंदा बोलेगा प्लीज एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ G to H if it belongs to the graph, which means the group number 1, and then it again starts increasing. So if I do a trend analysis, I will go up, right? तो मेरा J जो है वो यहाँ पे और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 1200, 1400, 1500, provided I knew what is group 1 periodic table of first ionization energy versus element is going to look like. If you don't know that, you can't do this. Not possible. मैं आज पूरा लाइक मेमोराइज करता हूँ। कुछ नहीं है, 3-4 ग्राफ है, शील्डिंग, मेमोराइजेशन साइज, कर लूँ। बस वो कर लो, तुम्हारे पूरे नंबर, फिर इसमें भी तुम्हारा खाता खुलना चाहिए। फिजिक्स में यू हैव टेस्टेड वन, राइट, क्लोज टू फुल मार्क्स, अब है ना? वो तो मैंने प्रैक्टिस अभी करानी है उसकी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इट्स वेरी मच डूएबल। प्लीज एक्सर्ट योरसेल्फ, माय एक्सर्शन अलोन डजंट हेल्प यार, देन आई विल वो टीच यू लाइक। मेमोराइजेशन करना बहुत वो कोई है बात नहीं, वो। कोई बात नहीं, स्टार्ट स्टार्ट। आई हैव अ बोर्ड इन एक तो फ्रंट ऑफ मी, बाय द वे। मैंने एक बोर्ड रखा हुआ है अपने घर में, यू सॉ इट राइट, नेक्स्ट टू माई बेड। मैं उस पर ये अपने सब की ब्लैक बोर्ड, पॉइंट्स लिख लेता हूँ सारे, मुझे याद नहीं होता है क्योंकि फिर सर ऊपर से लाइक दैट्स अ वे इट और इज एक यार फॉर एवरीवन। व्हाट्स अ चॉइस, क्या है हमारे पास? रहता कोई है, चॉइस नहीं है। फिर लॉजिक फेल होने लग जाते हैं इसमें केमिस्ट्री हाँ में। हाँ जी, लॉजिक भी चाहिए, मेमोराइजेशन भी चाहिए इसके अंदर, यू हैव टू मेमोराइज इट। क्या करें? और सर फिजिक्स में ऐसा है कि कुछ रूल्स ये स्टेट करके उससे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। यू हैव नॉट डन सर द जेई एडवांस सरदान बुक्स। नहीं, मतलब एसएल उड़ा के बोल रहा हूँ। हाँ वो तो यार, वो तो रेपिटेशन है ना एक ही चीज की 10 बार, बट once you get into that level you will realize कि वहां पे ये सरदाना सिर्फ के भी सर क्वेश्चन की बस लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, बाकी क्वेश्चन है इजी। get accustomed to it, get accustomed to new languages, new exposure, new questions, same question being asked in different ways. Automatically your brain will get attuned to address them. Easy easy रखोगे तो easy easy कर पाओगे, सिर्फ मुश्किल वाले मतलब अटेंड करोगे तो उसमें मुश्किल वाले। लैंग्वेज का सर सरदान में सिर्फ लैंग्वेज का ही है कोई बात दिक्कत। नहीं, आई बाकी विल हेल्प यू, क्वेश्चंस है वी सिंपल विल ओपन दैट, कॉन्सेप्ट। डोंट वरी, वी विल ओपन दैट एंड वी विल डिस्कस हाउ टू गो अबाउट इट, बट मैंने आज मूट सरदाना पॉइंट पे करे इज हैं वैसे। कि अवर ब्रेन हैज समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे उसे मोल्ड करोगे वो मोल्ड हो जाता है। दिस इज द पावर यू हैव। इफ यू कैन मोल्ड योर ब्रेन टू डू mathematics, which is your favorite, then you can do easier things. This is relatively much easier than maths. You have नो not seen the maths of JEE Advanced प्रॉपर ओके, तरीके से। मतलब जे एडवांस में तो ठीक है बट हाँ, ये कंपैरेटिवली इजी गिनते हैं, पीपल नहीं, स्कोर वो वेल इन बोलते हैं दिस। वैसे, वो बोलते भी कि जे हाँ, एडवांस की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इजी होती इजी है। होती है। व्हाई वुड यू लाइक टू थ्रो इट इन डस्टबिन व्हेन यू नो प्रीटी वेल दैट। मैं अच्छा, लेट मी आस्क यू, व्हाट इज द व्हाट्स सो एक्सेप्शनल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर? सर हमने पढ़ी हुई है ये मत बोलना पढ़ी नहीं है, पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो है, मैं हाँ, लिख भी अब दूंगा। याद है तुम्हें? याद है, लिखो जरा। नहीं मैं लिख देता हूँ, हाँ लिखो। अगर ये नहीं पता एक्सेप्शन क्या है, पर मैं लिख जरूर दूंगा। एक्सेप्शन है, अगर तुम्हें एक्सेप्शन नहीं पता कि कैसे भरा जाता है उसको, लिखोगे कैसे तुम? व्हाट इज एक्सेप्शन? नहीं एक्सेप्शन पता है, इसलिए मैं लिख रहा यही दोनों याद रखने होते हैं सिर्फ पेपर में, हूँ। बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Just go and memorize some of this stuff and easily you will just sail through. It's very disheartening if you put so much effort. एग्जाम्पलर हो गई थी पिछली बार केमिस्ट्री की। सर क्रोमियम की लिख दी, हाँ जी, क्रोमियम की। वेयर इज द एक्सेप्शन मार्केट? अरे सर ये तो रही। हाँ ठीक है, ठीक है, कॉपर। चलो ये तुम्हें रटा हुआ है, अच्छा ठीक है, ओके, नॉट बैड, मैं आर्गन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके।
मेरे से Okay, एक्सेप्शन। ठीक है। Okay, ये सर ग्राउंड स्टेट की है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें याद है ये। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर। हमारा एक टॉपिक रह गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी बहुत इजी है। आई थिंक डिड वी स्टडी एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स, इसमें ऑक्सीडेशन होनी भी चाहिए, है एनसीईआरटी में ही नहीं। है कोर्स में। केमिकल प्रॉपर्टी भी तो है ना, जब पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन में केमिकल प्रॉपर्टी वर्ड आता है, तो इसमें भी आएगा। ओके, नाउ डू वन थिंग, प्लीज sit down, take a break. When you feel relaxed, please sit down on NCERT, read it again line by line, attempt questions of NCERT, keep your reference book along and complete जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें पीछे वाले MCQ, शॉर्ट आंसर, वन लाइन, वन मार्कर, टू मार्कर, देखो वो आंसर कैसे देता है वो। लॉजिक इज इनबिल्ट इनसाइड यू, ऑल यू नीड इज सम रैम and random access memory. That's all you need. Your CPU is good. ठीक है। Your ROM is also good. क्या सर? ROM, रॉम? ROM भी होती है ना कंप्यूटर में। रॉम नहीं होता सर, वो रैम होती है। रैम अलग होती है, ROM अलग होती है। When the processing is happening, you're quickly able to process and keep it in ROM. Important things. But रॉम, अच्छा, day रीड to day ओनली basis, मेमोरी। day to day basis, processing is weak. As in exam like preparation. ये लिखना है यार इसको तो. Write an exam with explanation. So see you tomorrow. Please take some. It'll take you, I think, not more than 2 hours to complete the chapter. 2 घंटे लगेंगे। साथ में क्वेश्चन देखो ना कैसे आते हैं। मैंने भी तो सेंड यू सम मटेरियल आल्सो ऑन दिस, यू हैव मटेरियल, ओपन इट, सी दिस दोस क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीटली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अरेंज करो, इलेक्ट्रो एफिनिटी को अरेंज करो, पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्यों होता है, ग्राफ्स, डन। व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। कोई असाइनमेंट मिली है? नहीं, मैंने सर मैं आपको भेज देता अगर मिलती तो। अच्छा, वेड यार, केमिस्ट्री की असाइनमेंट नहीं दी। सर मैंने आपको सारी जितनी मिली तो मैंने आपको भेज दी है सर। ओके, और प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल की सर उसका मैंने मैम को बोला था कि वो लाइक भेज दे मुझे, पर उन्होंने भेजी नहीं। ओके, ठीक है, चलो, टेक सम टाइम out for yourself for this exam, chemistry. I'm going to test you on Monday. Tomorrow I will again pick up some of this chapter and we will start the new chapter also. Try to. ठीक है। But first let's consolidate this chapter in our mind. कि सर कहीं किसी भी कोने से पूछ लो, मेमोराइज्ड है आंसर, स्कूल वाला आंसर लिखने आता है, MCQ नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सॉरी इफ इट वाज हार्श, बट आई हैव टू बी हार्श समटाइम्स, मुझे डांटना पड़ता है किसी और को डांट दो। सबको। उसको भी मैंने डांटा था, गर्वित को। तुम्हें सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, बिकॉज मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। और कम कर। ठीक है जी, सी यू देन, थैंक यू वेरी मच।